ये देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन, पहले आपको रिग्रेशन समझना पड़ेगा क्या है, तो आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन का क्लू भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पे हमने किसका रिग्रेशन किया? We have done regression of Tata Motors, which is the dependent variable, against Nifty 50, which is the independent variable. ठीक है ना? Independent variable was always on the x-axis. That was market index Nifty 50, and Tata Motors or any other stock will always be on the y-axis, because stocks behave in response to changes or anticipated or unanticipated on the marketplace. तो वो y एक्सिस पे आ गया। फिर हमने रिग्रेशन किया जिसकी ये समरी आई थी, एंड इस समरी में दो दो फीचर्स है, इंटरसेप्ट एंड स्लोप। ये जो x वेरिएबल 1 है, दिस इज एक्चुअली योर स्लोप, एंड व्हाट वाज द स्लोप हियर? 1.74. So ये 1.74 क्या था? Do you remember? That was beta, which we had also calculated by a statistical measure, covariance between the stock and the market. ये देखो, covariance between the stock and the market divided by variance in the market. उससे जो फिगर आया था, that was also equal to beta. ठीक है? Now, what are explained and unexplained variances? ये देखो, ये दिस इज योर RSS, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स, ये वाला, दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरायंस। ये रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स जो है, दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरायंस, एंड जो वेरायंस एक्सप्लेन्ड नहीं होती, अनएक्सप्लेन्ड वेरायंस, दैट इज योर रेसिडुअल। तो जो हम अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात कर रहे थे ना, unsystematic, this is your residuals. So the square of the residual terms, which is mentioned here, is actually a measure of your unsystematic risk. Now the question is कि सर ये आता कहाँ से है नंबर? ये curiosity तो you would be having in your minds कि where am I getting this number from? ये numbers कहाँ से आते हैं? Where am I getting this number from? So I can create a graph here where I can have the line of best fit and the equation. तो मैं क्या करूंगा? On the x-axis, I will take the Nifty returns and put it here. And on the y, ये x-axis है, so this is Nifty. And I will take the y returns also, which is the stock returns. ये देखो, Tata Motors के returns है. I take this here and I put it on this sheet like this. So stock returns we just read is always on y, and Nifty is always on z, and we created the regression. Now we can create a regression scatter also. So अगर मैं इसका, if I do a chart which is a scatter diagram, ये देखो, this is your scatter diagram, जो plots में आपको बता रहा था ना, dots क्यों आ रहे थे? This is your scatter, regression scatter, which tells you how the predicted values pan out by this equation. Y is equal to mx plus c. Y में stock returns, m is your beta, x is Nifty returns, c is your interest. अब इसमें मैं एक line of best fit भी डाल सकता हूँ. So if I want to put a line of best fit here, I can add a trend line. ये देखो. Can you see? This is that trend line. और इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी यहाँ पे. तो जैसे अगर मैं चाहूं कि मैं इसकी इक्वेशन डालना चाहूं,
So, and we'll compare if the equation is the same equation that we can see by regression. ये देखो क्या आया यहाँ पे, y, please look at this carefully. What do you see? Y is equal to 1.7396x plus 0.0178, where 1.7396 should be m. M is your slope, slope is your beta. तो ये क्या होना चाहिए? Beta. So if I go and capture this on my, अगर मैं अनोवा टेबल पे जाता हूं तो देखो यही वैल्यू आती है कि नहीं आती है. Please look here. What is the value that you are seeing? 1.739. Same value. वही सेम वैल्यू आपको यहां चार्ट में भी दिख रही है, ग्राफ में. ये देखो, C is इंटरसेप्ट. तो ये देखो इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, देखो संस्कृति. व्हाट इज द इंटरसेप्ट? 0.0178. Look at the intercept on the graph. 0.0178. सेम इक्वेशन. अब ये इक्वेशन हमने क्यों एस्टैब्लिश की? दिस इक्वेशन वी हैव एस्टैब्लिश्ड टू प्रिडिक्ट कि मेरे स्टॉक के रिटर्न्स क्या होंगे अगर मैंने निफ्टी की ये फोरकास्टेड विथ वैल्यू. Remember, regression always establishes a relationship between an independent variable and a dependent. तो मेरा जो इससे जो भी इक्वेशन आएगा, रिग्रेशन इक्वेशन, उससे we will always capture the कि अगर मेरे निफ्टी के रिटर्न्स सपोज ये different values of Nifty रिटर्न, तो उसके अगेंस्ट में यूजिंग द इक्वेशन स्टॉक के क्या रिटर्न यूजिंग दिस. तभी तो आप फोरकास्ट करोगे ना. रिग्रेशन हम क्यों करते हैं? फोरकास्ट करने के. तो अगर एक साल का डेटा है मेरे पास निफ्टी का फोरकास्ट, तो निफ्टी के बेसिस पे मैं टाटा मोटर्स का फोरकास्टेड रिटर्न्स निकाल. दैट्स व्हाई वी यूज दिस फोरकास्ट. So what I will do is I will first create the predicted values. The predicted values. ये देखो. So just look here. This won't be tested, so don't worry. आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो. So I'm going to put out my predicted values here. Predicted values कैसे आएंगे? Remember on that graph I was showing you YP. This is YP, predicted values. So y is equal to mx plus c. So यहाँ पे is equal to m, जो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, which is your slope, into every individual x observation. x observation क्या होगा? निफ्टी के रिटर्न्स प्लस c क्या होगा? इंटरसेप्ट. क्लियर? तो हर एक निफ्टी के रिटर्न के आगे हम प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ टाटा मोटर्स की रिटर्न को फाइंड आउट कर रहे हैं. ये बन गया आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको रीड करना है, आप कैसे रीड करोगे? कि बेस्ड ऑन माय रिग्रेशन मॉडल फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन द प्रिडिक्टेड रिटर्न ऑफ टाटा मोटर्स इज 4.4%, लेकिन उसका एक्चुअल रिटर्न कितना है? -9.12. समझ में आ रहा है? सो ये मेरे प्रिडिक्टेड रिटर्न्स है. इसी तरीके से आई कैन फाइंड आउट माय प्रिडिक्टेड रिटर्न्स फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस. ये सारे ऑब्जर्वेशंस का मैं प्रिडिक्टेड रिटर्न्स निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द मॉडल, रिग्रेशन मॉडल आउटपुट्स. नाउ आई विल कम टू द एक्सप्लेन्ड वेरायंस. एक्सप्लेन मॉडल क्या एक्सप्लेन करेगा? वेरायंस क्या होता है? डेविएशन ऑफ द वैल्यू अगेंस्ट द मीन. So मेरी predicted value, how far is it away from the mean value? वो आपकी explained variance है. So yp minus y bar. Yp is predicted value, y bar is mean value.
So how far is my predicted value away from the mean will give you my explained variance. ये देखिए आप यहाँ पे. So suppose I take yp minus y bar. You remember y bar should be what? Y bar should be the mean return of Tata Motors. और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे बिकॉज वेरिएंस में हमेशा स्क्वायर टर्म्स पे होता है. क्लियर? And then I will do this for all observations and I will take a sum. सम लेने के बाद मुझे ये वैल्यू यहां पे भी दिखनी चाहिए. I should be able to see this value here. Now please pay attention. यहाँ पे अगर मैं इसका सम लेता हूं I should get my explained variance. कितना आता है explained variance? देखो 0.5045. This is what I did. Predicted minus mean square for all observations. क्या वैल्यू आई यहाँ पे? 0.5045. Now let's go to the regression summary. This is your ANOVA table. What is the value you are seeing here? 0.504. वही वैल्यू. तो एक्सप्लेन वेरिएंस एनोवा. फर्स्ट ऑफ ऑल एनोवा का फुल फॉर्म क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. मतलब जो मेरे डिविएशंस उसकी हम एनालिसिस करें. तो पहला हमने क्या किया? प्रेडिक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हमने फाइंड आउट किया. दैट विल बी समथिंग. और दिस इज अ डिविएशन और दिस इज अ वेरिएंस व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय आवर रिग्रेशन मॉडल. इसीलिए जो आरएसएस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस. Here now there will be something which the model cannot explain. That will be actual minus predicted. But how far is the actual value from the predicted? तो उसको मैं यहाँ पे फाइंड कैप्चर करूंगा which is your unexplained variance. Predicted values. Yes. Y is equal to mx plus c. So जो हर एक स्लोप जो आपको रिग्रेशन आउटपुट से स्लोप मिला विच इज योर बीटा इनटू एवरी एक्स वेरिएबल. एक्स वेरिएबल मतलब निफ्टी का रिटर्न प्लस इंटरसेप्ट. और वो हर ऑब्जर्वेशन के लिए करेंगे. तो बेसिकली जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वाई अपने आप चेंज हो जाएगा. रिग्रेशन मॉडल ये इंटरसेप्ट है. ये देखो इंटरसेप्ट. So now what I will do, I will find out the actual minus predicted, which will be your unexplained variance. So actual value of Tata Motors return minus predicted value of Tata Motors return. इसका हमेशा we'll take the square terms. तो ये देखो ये हो गया square terms. And now again I am going to repeat the same exercise. And I will find out the sum. Now this also you should be able to trace on your, this also you should be able to trace on your ANOVA values. कितना है unexplained variance? How much are you getting? 0.8586. Now let's go to the regression summary and look here. यहाँ पे क्या आ रहा है? What are you seeing here? What number? 0.85. तो जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है वो ये. तो आशी, इफ आई वर टू आस्क यू कि ये वो पोर्शन डिविएशन का जो मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा और ये वो पोर्शन है वेरिएंस का जो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. और इन दोनों का टोटल हो गया टोटल. तो अगर मैं इसका प्रोपोर्शन दूं explained by total, what does it tell you? ये देखो ये हमने क्या किया, हमने टोटल वेरिएंस को दो हिस्सों में बांटा.
This is that part which the model can explain. This is that part which the model cannot explain. This is the total. So if I take explained by total, what should I get? The proportion of the variance which is explained. Very good. Which is the predicted strength of the model. This is the predicted strength of the model. So let's do that. यहाँ पे I will do this is equal to explained by total. कितना value आया? ये value आई? Now can you see this value is the same as this value? This value that you get here, Arshit, this by this total is 0.3701. Isn't it the same as this value here? This is your R square of the picture. R square क्या करता है? R square determines the predicted strength of the model. कि आपका मॉडल कितना accurately predict कर रहा है स्टॉक के रिटर्न्स based on that. That's how you read the data. Now, coming back to our assignment, remember where were we? हमने वो ग्राफ बनाया था और ग्राफ में हमने so it tells you that R square demonstrates the predictive strength of the model. You can write it down. R square is also called as coefficient of determination. R square जो है ना ये R square देखो यहाँ पे लिखा है कशिश. Look here. R square. This is also called as coefficient of determination and is a reflector of the predictive strength of the model. This is your coefficient of determination and it is a reflector of the predictive strength of the model. इसका मतलब अब layman's terms, suppose मुझे finance नहीं आता है, I am dumb, and you want to explain finance to me. How will you explain this? This means that this model is able to explain 37% of the change in the Tata Motors returns caused by changes in the Nifty. Yes. Now come back to that diagram which I was drawing on the board. Remember total risk. Total risk is measured by standard deviation. उसके दो हिस्से होते हैं, systematic risk and unsystematic. Systematic risk is something that you cannot control or avoid. It is measured by beta, जो हम देख चुके हैं. Unsystematic risk is what? Unsystematic risk ये residual, the unexplained variance, जो आपके कंट्रोल में है. आप अपनी डेटा को और लंबा पीरियड के लिए ले सकते हो, right? You can increase the prediction, and if you are building a portfolio, आप different stocks को ले सकते हो. You can diversify your portfolio, and you can eliminate the unsystematic risk from the portfolio because unsystematic is the firm specific. What is this P value? P value to statistical significance. If P value is less than 0.05, it demonstrates statistical significance. If it is more than 0.05, it means there is no statistical significance. तो अभी कैसा है कि see in this case, now take an example. Suppose you are not, I'm just taking an example. I'm not getting good bonus this year. आपने कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया and last 3 साल से आपको अच्छा बोनस नहीं आ रहा है. एग्जाम्पल दे रहा हूं. I have joined a corporate and last 3 years I have not got good bonus. I have joined a corporate house and last 3 years I have not got good bonus. इसके दो पहलू हैं.
एक, the company is not performing well. दूसरा, I am also not performing. Company not performing well is out of your control. Systematic risk. You not performing well is in your control. Unsystematic. समझ में आया? तो unsystematic risk को हमारा, it's our responsibility. Unsystematic risk is our responsibility to eliminate. इसीलिए जब हम कैपेन मॉडल पढ़ रहे थे, कैपेन मॉडल का क्या इक्वेशन था? Expected return of a security is risk-free rate plus beta into Rn minus Rn. We are only taking the systematic risk component, not the total risk, because it's your responsibility to reduce and eliminate unsystematic risk by diversification. So CAPN places responsibility on the fund managers, investment advisors to take appropriate measures, select stocks which are possibly negatively correlated with each other, and diversify the portfolio to minimize the unsystematic risk as much as possible. And that's why they price the returns only based on systematic risk. Because unsystematic risk आपकी अपनी परफॉर्मेंस है जिसके लिए आप जिम्मेदार. This will set the tone and the background for security market line, जिसमें x axis में हम सिर्फ और सिर्फ systematic risk लेते हैं, which is your, and how your returns vary with that beta is demonstrated by security. तो ये जो दो चीजें उनमें पूरा फर्क है. Don't ever get confused. When we are regressing stock returns against market returns, the slope is the beta. But when we use that beta on the x-axis and we determine how the returns vary, the line that you get is called as SML or security market line, which will be the next topic. So unless and until you understand this, there is no way in which you can understand SML. इसीलिए I always give this as a prelude. और इसीलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट भेजा आपको, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, तो उसमें काफी कुछ कैप्चर्ड है, बट वो जब तक आप रियलिटी में करोगे नहीं, वो आपको ग्लोबल ज्ञान लगेगा. So for you to understand the depth, you need to be able to doing this on your own. Don't worry, this is not going to be tested in your exam. Regression, and maybe I can ask you conceptual questions, that's okay, but never ever ask you to do regression. Maybe in your projects, yes. समझ में आया? But how is this takeaway? How is this takeaway important for SML estimation is included in your. इसका conceptual understanding पूरा होना चाहिए, नहीं तो आप SML नहीं समझ पाओ. तो अब आपको पता चला कि जो SML होता है वो सिर्फ और सिर्फ SML और कैपेन, हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पे फोकस करें, unsystematic risk पे नहीं करें. That's your learning lesson from this particular. So I'll call this video as background to security market line, and I will share it with you people, which you can refer to it as a prelude for security market line and CAPM. Clear? Very good. अभी आया डाउट है कोई? बताओ. Thank you.